It is Wednesday night, and I smell some amazing FIFA action cooking right up the alley. Welcome, ladies and gentlemen. This is the eISL Season 2 brought to you by Nordwind Gaming. My name is going to be Fixes. Joining alongside me will be TTR. And yesterday was a night of some amazing action, a lot of surprises, and heading on today, I expect nothing less than that. But before we get the show started, of course, I've got to ask this to you, TT. What have you been up to? आई थिंक आज के दिन पे तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली गेम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपने भी कहा कि कल के दिन हम लोग जितना ज़्यादा आगे बढ़ते गए, शाम से जब तक रात होता गया तब तक हम लोगों को जो एक्शंस है वो भी बढ़ते हुए दिखे, और आखिर में जो मैच खत्म हुआ हम लोग कल भी कह रहे थे आज भी कहेंगे, मज़ा आ गया। सो आज जो है कुछ उसी तरीके के जो गेम्स है वो हम लोग देखना चाहेंगे। एंड देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस भी हैं, क्योंकि इसके पहले जिन लोगों के सिर्फ 2 मैचेस हुए थे उनके लिए ये तीसरा गेम वाला। बट 2 टीम्स ऐसे हैं जिनके 3 मैचेस हो चुके हैं, उनके लिए आज 4th गेम होने वाला है, एंड उनका कुछ खास पोजीशन नहीं है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो वो मैचअप्स आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो है कि सब टीम्स कोशिश कर रही है समझने की कि उनका ओपोनेंट जो है वो क्या कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Yeah, I think it is a very crucial part, and let's take a quick look at the format, right, and see how things have evolved. Because from what I have heard, there are a few changes, right, and right now, I mean, you've got to worry about nothing at all. The league stages still remains quite consistent. It's from 28th of February to 26th of April. So we've got 11 clubs, 22 players participating, 55 matches to be played, and then we've got our playoffs. Now this is where we've made some changes. It's going to be from the 6th to 7th of May. So it's going to be just a 2-day affair where we've got 6 clubs, part or are qualifying from the 11 that we had, and whoever wins this entire tournament gets a huge prize pool. Along with that, both the players from the champions team get to play the FGS 2023 play-in tournament. So that is also up for grabs. Last time we did see, Chennai FC heading on along over there with Saranch, representing the Indian flag. But as we head along and take a look at what's on the line in terms of the moolah, it is a staggering 33 lakhs prize pool that we're talking about, out of which the first position receives 4.5 lakhs, and the second gets 2 lakhs, third and fourth, well, they just share 75,000 each. या एंड विद दिस प्राइस पूल मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इधर टाइटल, eISL विनर टाइटल, जिसके बारे में हम लोग रोज डिस्कस करते हैं कि सबसे ज्यादा प्राउड फील तब होता है जब eISL आप जीत जाते हो। प्राइस पूल तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ जो प्लेन्स पे सीट मिलेगा उधर आप अपने क्लब को भी एंड उसी के साथ अपने नेशन को कर सकते हैं रिप्रेजेंट। सो उससे ज्यादा बेहतर चीज और क्या ही हो सकता है। And taking a look about the matchups for tonight, let's take a look at the schedule that we have lined up for you guys, and that is going to be really exciting because FC Goa, they're going to be playing for that for the third time, and would be looking to retake that first spot that Mumbai City FC has just taken away from them, and Odisha FC this time hoping that they won't be unlucky and will be playing the second game. And as we head along to our second matchup of the evening, Kerala Blasters FC, their fourth game, going up against an equally struggling team that is East Bengal FC. So this is another match to watch out. But when we head on to match number 15, this is where things get really spicy. The main event, if you can call it, it is going to be Mumbai City FC taking on Hyderabad FC. जी हाँ, एंड आज के तीनों गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर बात किया जाए हैदराबाद एफसी एंड मुंबई सिटी एफसी, दोनों के ही जो प्लेयर्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा लाजवाब खेल रहे हैं। एंड विद दैट एफसी गोवा एंड ओडिशा एफसी, ये दोनों टीम के भी अगर प्लेयर्स की बात किया जाए तो बहुत अच्छे फॉर्म में हम लोग को देखने के लिए मिले पूरे थ्रू द टूर्नामेंट। Yeah, I think this is going to be really interesting because Odisha FC has not been playing in the eISL for a long, long time. I mean, it was the second day that they participated, and from then onwards, it's going to be the second matchup. And we still remember what happened to Vakia, that soft pen red card Virgil van Dijk Yeah. that still is lurking in my mind. But today, it's going to be so much more tougher because he's going to go against an in-form V Sharma. Now, if you talk about 8 nets, he's going to be dealing with Afnan. The only silver lining, what I can figure out for Odisha FC would be
that their co-op is pretty strong. So FC Goa, I mean, a little bit of a correction there. It's not Afnan. I'm still back in the past days. It is going to be Adi Zima taking off against 8 Nates and Vakya and 8 Nates. This is their first time in the ISL playing in the tournament. They're also quite established players in the FIFA community. So that also comes into the picture. It's going to be an interesting matchup. But if I have to ask TT to you about your Hmm. predictions as to what do you think? Do you think FC Goa will just cruise through this matchup? Because Adi Zima last time lost his individual game. He conceded Hmm. 5 goals. बट आई थिंक देयर आर सम चांसेस ऑफ लाइक ये ड्रॉ होने के, मुझे लगता है कि ड्रॉ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कल के दिन पे अगर हम लोग बात करें लाइक केरला ब्लास्टर की तरफ से भी हम लोग को एक कमबैक देखने के लिए मिला। सो कोई टीम अगर या फिर कोई इंडिविजुअल प्लेयर अगर स्ट्रगल करे, दैट मीन्स ये नहीं कि वो शायद आज भी स्ट्रगल करे। तो मुझे लगता है कि ये जो उनको एक लंबा गैप मिला था स्टार्टिंग से अभी तक, जो गैप उनको मिला उसमें उन्होंने इम्प्रूव किया होगा एंड जो इम्प्रूवमेंट किए होंगे उसका आउटकम फॉर श्योर आज देखने के लिए मिलेगा। सो या उड़ीसा एफसी की तरफ से मुझे तो लगता है कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें एफसी गोवा की, सो उनके बारे में इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो परफॉर्म करने वाले हैं। सो उस जगह मुझे लगता नहीं है कोई भी प्रॉब्लम्स है। सो लेट्स सी पहला मैच किस तरीके से जाता है। It is going to be really exciting, and let's not keep you waiting any longer, should we? Because we are directly going to head inside the game. It is FC Goa, that's the home team from left to right in the orange kit, and we've got from right to left. It is Odisha FC in their black kit, and I think it's V Sharma or Vanshaj, whatever you might call him. He's a champion of a player. The way he plays, and right off the bat, really aggressive, trying to make those passes through those wings and looking for that opening. But the left back for Vakya, Capdevia, was present, was alert, made sure that the ball did not go any further. एंड विद दैट एफसी गोवा अगर हम लोग बात करते हैं उनके फुल बैक्स की, सो फुल बैक्स की तरफ से हम लोगों को काफ़ी शानदार इंस्ट्रक्शंस अभी तक देखने के लिए मिले। देखिए जो विथ प्रोवाइड कर रहे हैं उनके फुल बैक्स आगे बढ़ के ओवरलैप पे, वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है एंड यही चीज़ की ज़रूरत होता है अगर आपको फुल ऑन अटैक पे जाना है। बट Oh, उसी जगह पे एक काउंटर आता है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन पास हो सकता था लेकिन थोड़ा लेट हो गए, जिसकी वजह से इधर हुआ एक और साइड। yeah, I think it was a good attempt on a block-through pass over there, directly, instantly just giving it away, but could have been a dangerous chance for V Sharma had Ronaldinho performed that skill move. I think he was looking for maybe a step over there, but the defense was quite alert. So Vakya, I mean, despite the fact last time I remember he had just 10 players playing, and we know when you've got pro athletes into the scene, 10 players against 11, it's a massive disadvantage, and as a result of which he could not do much. But this time he's not really intimidated by V Sharma with the way he's been playing. Still hasn't lost a single game in the eISL so far on an individual level. So it's going to be interesting if Bhagya can pierce through his defense and score a few more goals. He can, but let's see how क्योंकि देखिए अभी तक जिस तरीके से गेम चल रहा है, वी शर्मा एक बार फिर से अटैक पे गए हैं, लेकिन उतना डेंजरस नहीं दिखा है। अगर हम लोग आज बात करें शुरुआती 15 मिनट के अंदर, वी शर्मा यूजुअली जो करते हैं वो करने नहीं Ooh. मिल रहा, लेकिन इस बार भाग्य की तरफ से ये पास नहीं हो Oh. सकता था, बट वैन एक छोटा एंगल, जितना ज़्यादा आप राइट में जाओगे तो उस टाइम पे गोल का जो एंगल है वो कम हो जाता है। वही चीज़ होता हुआ दिखा, लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला है। कल लूशियो की तरफ से भी गोल्स देखने के लिए मिले थे, तो नो डाउट उनसे भी गोल इधर करा जा सकता है। Yeah, I mean, there are possibilities, but one thing we have witnessed so far is that Bhagya is being very patient. He's looking for those through passes, and he's making those runs. So that is something that Vanshaj really needs to watch out. And in that particular situation, when you've got a defender running alongside you, I think maybe he could have performed a skill move or something. Maybe could have just feinted him and switched his legs, gone for a fake and scored. But it's, like I always say, it's rather easier said than done. Ooh. Wanted to go for that Trivela, but not the power, and did not even green it, or wasn't attempted, as a result of which easily went into the keeper's.
जी हाँ, एंड एज़ ऑफ नाउ थियो हर्नांडेज़ के साथ बॉल काफ़ी शानदार कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। बाय द वे अभी तक अगर गेम की बात किया जाए तो वी शर्मा की तरफ से अटैक तो बना है, लेकिन वैसे क्लिनिकल नहीं हो पाए। कन्वर्जन तो थोड़ा दूर की बात है एज़ ऑफ नाउ क्योंकि लेकिन वैसा कोई जगह से अटैक नहीं बना पाए कि वो उधर से शॉट लेके फिनिश कर पाए। सो वैन डे सार को उतना ज़्यादा नहीं किया गया है टेस्ट, बट देखिए वगैया की अगर बात करें तो बैक टू बैक ये शायद तीसरा टाइम था जिस टाइम पे वो लो पास देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है वो कनेक्शन सही नहीं था। बॉल अगर मिल जाता तो बन सकता था मौका, क्योंकि ऑलरेडी एम्बापे राइट साइड से रन निकाल लिए थे। बाट काउंटर पे इस बार वी शर्मा, एम्बापे विद द बॉल, क्या ये फिनिश कर पाएंगे विद शॉट एंड पहला गोल आता हुआ इस गोवा के लिए। एंड वी शर्मा आउट ऑफ नोवेयर जस्ट दो टच एंड उसके बाद एम्बापे का कंट्रोल एंड फिनिशिंग। व्हाट अ गेम। This is exactly what I was talking about. Bhagia should have done, right? A little bit of a turnover, a little bit of a feint, maybe could have made things sure it would have been equalized at this point. But nonetheless, B. Sharma clearly proving that he's the more experienced player. He knows how to handle those really tight situations. And when we thought that he might get intercepted, as Oh. Bhagia almost created a chance, a little too hasty there in his approach, and as a result of which it went out for a short corner. And now Bhagia is also resorting to some long shot threats right now. He's going for those finesse. He's not hesitating to take those trivelas. I like this mixture. He's got a lot of moves in his arsenal, and all he's got to make sure is he does not get a red card on his Van Dijk. Otherwise, things will go pretty much south. And he was gutted by that. We could clearly see last time. But still, I think one of those things we can really applaud is the fact that he did manage to score a goal with just 10 players. So that's an accolade Hmm. that I think he can take along with him, because it's very difficult against a pro player when you're scoring. And I think Vicky, out of all, who's going through a really good form, but eventually he got thrashed. But let's see now, Bhagia again on the attack, and that could be an offside run, but looks like it's still in play with Hakimi, but that cutback pass did not seem to go through. वन मोर टाइम, बनता हुआ मौका। अटैक पे जा चुके ऑलरेडी वी शर्मा विथ थियो हर्नांडेज टू रोनाल्डो एंड फिनिशिंग। इस जगह से रोनाल्डो को मिस नहीं करने वाले एंड 2-0 पहला हाफ खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनट बाकी था, और उसी के साथ दूसरा गोल भी इधर जल चुके हैं एफसी गोवा। वी शर्मा शुरुआत में लग रहा था कि प्रॉपर कंट्रोल में है वागिया, एंड ओडिशा एफसी शायद फर्स्ट गोल इधर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। एक गोल का कमबैक एंड उसके बाद दूसरा भी आ गया बहुत जल्दी। सो फर्स्ट हाफ के बाद मुझे तो लगता है कि अभी ओडिशा एफसी को थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, एंड मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सोच समझ के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस फ्लो पे अभी के लिए एफसी गोवा आ चुके हैं, वी शर्मा आ चुके हैं, अगर इसी तरीके से उनको मौके मिलते रहे तो शायद हम लोग को और भी गोल्स इधर देखने के लिए मिल सकते हैं एफसी गोवा की तरफ से। You know, this is where the second goal is where Vagya's defense was just all over the place. Look at it. Look at the composure. Look at how he turned the ball and again created that space. Now that is further enhanced in this next goal that was created. Look at the ball roll. Just he did the ball roll twice, and he found that perfect opening for R9 and passed it on. And that shows that in that final third, what sort of a composure this lad holds, and as a result of which now FC Goa, the Gors are leading 2-0 against the Juggernauts. And this is something where Bhagia might be cussing himself, because the first goal, I mean, yeah, we know if Mbappe does things like that, it's pretty difficult, but this could have been possibly avoided. We saw one of his defenders charging towards Theo Hernandez, further giving him that room. And once you perform the skill move, for all the viewers that are relatively new to FIFA 23, once you do that ball roll, you get a lot of passing spaces. Sometimes you can just do a ball roll and get that little extra space and take a shot directly. But here he did the former, passed it on towards R9 and scored a goal. And now they've got a daunting task, that is the Juggernauts ahead of them
that they have to, somehow equalize not just with one but two goals. And considering how deadly Vanshaj has been looking, I feel, there are few more goals also coming in for the Gors. Yeah, and as of now इसी को देखिए बार-बार वी शर्मा की तरफ से एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है कि जब वो काउंटर में जा रहे हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। वो जस्ट काउंटर में जा रहे हैं 1-2 1-2 करते हुए विंग पे पास खिला रहे हैं एंड उसके बाद जाके डायरेक्टली कट इन कर रहे हैं। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो फुल्ली क्लियर है। उनको पता है कि उनको क्या करना है, उसके ऊपर वो करते आ रहे हैं। देखिए मौका इस बार बन सकता है। एम्बापे बट जो सेकंड पास देने की कोशिश था वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं तो थर्ड गोल भी इधर एसी गोवा की तरफ से आ सकता था बट भाग्य उनको समझना होगा कि उनका जो डिफेंस लाइन है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ रहा है, ज़्यादा ही हाई लाइन वो खेल रहे हैं, जिसके वजह से इधर मौका मिल रहा है विश शर्मा को कि एक बार भी बॉल लूज अगर हो गया तो उधर से कन्वर्ट करने की बात देखें। इधर पहले थे इसी वजह से सेकंड बार बॉल पैर से निकलने के बावजूद चैलेंज किया गया एंड इस बार तो गोल किक होगा राइट हैंड साइड से हकीमी से बेलिंगम एंड वी शर्मा ज्यादा मिडफील्ड के ऊपर टाइम नहीं बिता रहे। जस्ट देखिए एकदम एंड टू एंड गेम डायरेक्टली हकीमी बट इस बार कैप्टेविया फाइनली इंटरसेप्ट करेंगे। नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन फिलहाल के लिए भाग्य के लिए। लेकिन शुरुआती अगर बात करें फर्स्ट हाफ पे तो अटैक बन ही रहा था, लेकिन सेकंड हाफ की अगर बात करें तो उसमें और भी ज्यादा अटैक बन रहा है एफसी गोवा की तरफ से। What I feel really, correct me if I'm wrong, TT, we'll just talk about that a little bit later because now Wagya is trying to create that attack but has been fended off. What I feel is Wagya has been exposed with his wings, right? Look at that. Look at that yet again. And R9 getting that chance, wanted to ball roll, get through, but he still has Van der Sar for the rescue, and Cap De Villa makes an interesting, or rather a very crucial interception over there. Tell me if at this point Bhagya should increase his width a little bit, because I've seen Capdevila staying a lot on that narrow position and this time could take another shot, Ronaldinho, but no, his stars aren't aligned as the keeper makes the save twice. So, and Bhagya, I think at this point he's feeling really low, he needs to do something. बहुत ज़्यादा कहने की टफ हो रहा है फिलहाल के लिए। वगैया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए वन मोर टाइम नो क्या चल रहा है लाइक दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत गलतियां, क्योंकि तीसरा गोल तो इतना दिख रहा था एकदम प्लेट में सजा के दिए थी गोल मार दो, लेकिन उस जगह पे गोल नहीं मार पाए सेकंड पास के चलते। बट इस बार मौका मिल चुका है वाग्या को एंड वो बीचों बीच बॉल पे आ चुके हैं, कंट्रोल मिलेगा। What? God! आज ये मैच कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, जिधर समझ में आ नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है। TT, I think Lady Luck does not love Bhagya. The first game he played in eISL, he got a red card. Now, every single shot he's taking. Look at that. He's taken 7 shots. And his expected goal percentage is also higher. Still, either it hits the crossbar or Van der Sar makes saves twice. The ball gets loose and still he does not get it. And anything that could go wrong for Bhagya is going wrong at this very moment. But I'm liking how Vanchaj has been particularly been threatening Vagya on those counter attacks. Like we said, getting a conversation back. I feel that Vagya is playing a little bit tight on the backlines, because I could see Cap Devia not staying on that little fullback position entirely, giving so much of room for Theo Hernandez. And last time we also saw R9 exploiting the same thing, and he almost conceded a goal. So that is something that Bhagya needs to understand, and he'll make do with it. But right now, Mbappe just beating through the final man of defense, could go for a shot, and he does, and misses. I think went for an outside footer shot, and that did not seem to go through. I mean, could have gone for a chip. I think that was an easy chip goal for Mbappe. Yeah. एंड बहुत सारे मौके इस तरीके से मिस किया गया है बाय द वे। सो वी नो कि 2-0 से आगे है इधर एफसी गोवा, बट जब मौका मिल रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पे फिर आपके पास ज़्यादा गोल हो सकता है जब एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट सब स्टैट्स देखे जाएंगे।
बट लूशियो बेहतरीन एक लॉन्ग पास थी और हर्नांडेस प्लेयर लॉक करते हुए इधर रोनाल्डो को ऑप्शन के हिसाब से यूज किया जा रहा था, बट थोड़ा स्लो डाउन Oh, किए एंड एक बार फिर से पिच कर चुके हैं दोनों प्लेयर्स के बीचों बीच से हलैंड। oh, आह, I think went for the through there. Had he gone for a direct pass, maybe could have been a hmm. different case. But Vanchit just wants to be crafty. He does not want to, do the conventional stuff, and he's just trying out various things. And it's fine. Vanchit has been very threatening. He's been the better player, and just we've reached our final 10 minutes of the game, where Vakya is yet to find an opener for his team. Forget the equalizer as Mbappe makes another blistering run. Bhagia's defense is all over the place. Space for Haaland, but did not opt to pass to him. And as a result of which, I think, Gods could have at least scored 4 or 5 goals. But I think Vanchaj knows that he's got that cushion, so nothing to really worry about. So he's taking his chances. एंड वाग्या की अगर बात किया जाए अभी तक वैसा उनको मौका मिला तो था जिसपे उन्होंने शॉट भी लिया बट गोल नहीं हुआ, लेकिन फिर से कोशिश करना होगा। इनके विंग पे प्लेयर ज़्यादा नहीं दिख रहे जो कि इनके लिए पासिंग ऑप्शन भी कम कर रहे हैं एंड उसी के साथ एंगल भी, क्योंकि विंग पे अगर लाइक इधर चाहते प्लेयर्स ओवरलैप पे तो मे बी एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन मिल सकता था, बट इस बार के लिए वी शर्मा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक बार फिर से बॉल छीना गया। रोनाल्डो तो बेलिंगम हो सकता है, यस बेलिंगम से डायरेक्टली What? बॉलिंग लैंड एंड वो क्रॉस कर चुके हैं No, no बट way. आखिरी मोमेंट पे वैन डे सार द सेवियर तीसरे गोल होने से बचा लिए, बट देखिए रिजल्ट तो इधर चेंज नहीं होने वाला। I really liked how he ball rolled and changed, but this time it is going to go in as FC Goa in the final breathing moments of the game managed to score one more with Ruud Gullit, and Vanchit seals it for his club, and they have won their first individual matchup for the evening. What an emphatic display by the gods, and Odisha FC, Bhagya especially. I mean, you could say he was a little unlucky, but more than that, his defense was all over the place and could not really anticipate those through passes coming through time and time again. Very rarely were those occasions where he managed to successfully make a read and get the interception. Otherwise, I was looking at even a more worse scoreline for Odisha FC, because I felt like 6-7 goals could have easily come in with the chances V Sharma was creating, and yeah, I think Vagya in the first half he was looking really competitive. It sort of looked evened up, but with the commencement of the second half, that is where V Sharma started taking control, and I think he was just the better player for the evening and managed to win it. एंड वही चीज इधर ओवरऑल पूरे गेम के अंदर हम लोगों को झलकता हुआ दिखा। वी शर्मा उनका फॉर्म अभी भी जारी रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, एंड ये है मैच नंबर 13 जिस पे हम लोग एफसी गोवा एज अ होम टीम उड़ीसा एज अ टीम परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, बट वागया शुरुआती टाइम पे फर्स्ट मैच इधर वो हार चुके हैं, एंड ये गेम हारने के बाद लाइक गेम नंबर 1 हारने के बाद अभी उनका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज ऑफ नाउ इस टूर्नामेंट के अंदर, जो कि उनका कोऑप मैच है, वो होने वाला है। सो कोऑप मैच में बाय एनी हाउ एफसी गोवा को इधर हराना ही हराना है। अगर वो इधर भी नहीं हरा पाते या फिर ड्रॉ करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा आ सकता है ओडिशा एफसी के ऊपर। सो उनको करना होगा या तो वो हराए, एटलीस्ट ड्रॉ तो करना ही होगा। हार गया तो फिर तो वो मुश्किल हो जाएगा। Yeah, and at least, like we discussed, there's that one ray of hope that Odisha FC last time they won their co-op game against ATK Mohun Bagan. So they would be desperately looking forward to that. But I think Bhagya really needs a mental reset at this point, because what Vanchas did to him was pretty nasty, right? Vanchas just was toying around with him, felt for a moment, so many open chances created. The moment he went for his substitutes, got the TOTY 12th man Haaland in, and you can see sort of havoc he can wreak. And even, I think in real life as well, just recently he scored 5 goals
in a Champions League game. So it goes on to show how deadly this player is, and maybe we are expecting some future upgraded cards, but I don't know if anything could Yeah. be better than a Team of the Year card for Erling Haaland, the kind of form that he is in. And there were multiple chances that Vanchaj created. We felt with Mbappe, his runs were pretty terrific. He also had a plethora of attacks. He also did those driven through passes where Vagya initially was doing a lot of that. What he was doing was a second variation of the driven through pass where you L1 and trigger a run for your player who's mostly Mbappe in that situation. And then what he does is while you were expecting he would give a direct driven through pass directly, he makes a pass and then directly throws for a driven through pass over there. And on most of the occasions, he managed to break through, but was eventually unlucky, or rather, was just messing up his shots, unable to finish. And then we even saw Vagya resorting to another style of play where he was taking those long shots, something that we haven't seen a lot of these players using. Trivela lately has been nerfed a little, but still, with these cards, you can easily use them. All you've got to do is just green time it. We've seen those beautiful reels coming up, all the time on my feed these days since I've been, looking out for a lot of FIFA reels. So Trivela's, I think there was that one instance he tried for the, R1 shot. He tried for the finesse, like I said. So, but nothing seemed to work for Vagya. But everything sort of aligned for V Sharma, and as a result, he managed to win the game. क्या एंड वी शर्मा स्पेशली अगर बात किया जाए, वो होता है ना कि आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा वेरी करता है आप जब खेलने के लिए उतरते हो, तो फॉर्म अगर अच्छा रहे तो लक भी आपके साथ ही होता है। तो काइंड ऑफ दोनों का मिक्सचर था, क्योंकि जिस जगह पे उधर वेंडेसार के बॉडी पे लग के वो बॉल जाके लगा बार पोस्ट पे, उससे तो पता चल रहा था कि यस इस बार ना फॉर्म है ना लक है फिलहाल के लिए भाग्य के साथ, क्योंकि वो उनका दूसरा गेम है। दूसरे गेम में भी कुछ खास उनका ज्ञान गया, एंड फर्स्ट गेम तो फिर भी इस गेम के अंदर तो गोल नहीं हुआ। फर्स्ट गेम में तो एक सॉफ्ट टैकल टैकल भी उसको नहीं कह सकते, जस्ट चैलेंज किया गया था एक सॉफ्ट, एंड उससे रेड कार्ड देके लाइक वैन डाइक को बाहर बिठाया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर होते हैं इस पूरे, लाइक कोई भी आप प्लेयर से पूछ लीजिए, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर हो सकते हो तो वैन डाइक, एंड आई थिंक मेरे लिए तो हो गई। सो उस जगह पे अगर देखा जाए तो उनको इधर बाहर बिठाया गया, एंड उसके बावजूद उन्होंने गोल स्कोर किया। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बट आज वो गोल स्कोर होता हुआ नहीं दिखा। सो एक दिन उनका कर्ज जा रहा है डिफेंस के ऊपर, एक दिन उनका कर्ज जा रहा है अटैक के ऊपर। तो देखते हैं नेक्स्ट डे क्या मिडफील्ड पे कुछ ऐसा होगा कि नहीं, बट आशा करेंगे कि वो और भी अच्छे परफॉर्मेंस करे। बट बहुत जल्दी कोऑप मैच चालू होगा, कोऑप में जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे उनको कैपिटलाइज कर रहा है, एंड उसके बाद जो है वो देखना होगा लाइक किस तरीके से आखिरी गेम समाप्त होता है। बट उसके पहले कोऑप, क्या लगता है आपको फिक्सेस, लाइक आप मुझसे पूछते हो हर टाइम प्रेडिक्शन क्या है, अभी बताइए आप क्या, आपका प्रेडिक्शन क्या है इस मैच को लेकर? Well, I mean, to be honest, they haven't. I mean, FC Goa isn't the best team in co-op yet. You've got two beautifully individually talented players, but they haven't reciprocated that in their co-op games. And it doesn't come down to how good you are individually all the time. It all comes down to how well synergized you are. And it's going to be an interesting matchup. But I think this time maybe FC Goa could, just ravage to Odisha FC just by that little hunch that I have. And nothing really, against Odisha FC. But the point is that I belong from Odisha. I would love to, watch them win. But with this kind of luck going on, I mean, Vagya has sort of become the new DK of eISL Season 2. So let me give all you viewers a little recap of eISL Season 1, where DK, when he used to play for Hyderabad FC, was one of the most unluckiest players. Every single time he took a shot or did something or the other used to happen. Like either it hit every other place except the back of the net. It never used to go. And the curse was real. So the curse has been carried forward from one neighboring state to another, from Hyderabad FC to Odisha FC, where now Vagya has to deal with the brunt of it. बहुत बहुत ज़्यादा कहने के टफ हो जाता है जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हो लेकिन बाद में उसका रिजल्ट आपके पास ना आए। तो या आई थिंक
इसी जगह पे रहते हुए आई थिंक मुझे लगता है कि लक तो एक फैक्टर है, लेकिन उसको छोड़ के भी अगर बात करें तो आज गेम थोड़ा-सा डाउन ज़रूर गया था। क्योंकि जिस तरीके से उनका डिफेंस वर्क कर रहा था, देखिए अटैक पे एक गोल नहीं हुआ, उसको लेके तो हम लोग ने डिस्कशन किया। बट जो डिफेंस था मेनली, उनके जो फुल बैक्स थे, वो फुल बैक्स तो ओवरलैप पे जा रहे थे। वो फुल बैक्स ऊपर जा रहे थे, लेकिन टाइम पे वो वापस नीचे नहीं आ रहे थे। सो डिफेंस पे आई डोंट नो लाइक क्या हो रहा था। उसकी वजह से उनका जो पूरा डिफेंस लाइन का स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ जा रहा था एंड इसके वजह से ही वो गैप्स मिले वी शर्मा को, बीच-बीच से बॉल निकाल के लेके गए और आखिरी गोल के टाइम पे जिस तरीके से अर्लिंग हालैंड की तरफ से लूसियो के पैर के नीचे से इधर नटमेग किया गया, वो देख के तो एक चीज पता चल चुका है कि अर्लिंग हालैंड कुछ भी कर सकते हैं। सो या वो चाहे इन गेम हो या फिर जैसे कि आपने कहा बाहर, लाइक जिस तरीके से यूसीएल में खेल रहे। सो ओवरऑल बहुत शानदार। You know, I think Erling Haaland is an absolute beast. He's a force to या reckon with, and recently, even in his real life, he has crossed हम्म Wayne Rooney's overall goal in the EPL. Right, he scored already 31, I guess, at this point. So clearly, the form kind of is also being manifested in the virtual version of football, that is in FIFA 23, and also in eISL, where we have Erling Haaland card being used by a lot of players. I mean, he mostly comes as a super sub, and whenever he comes, we know that he wreaks havoc inside the field. But yes, like you said, Vagya is the defense was kind of all over the place. There were multiple areas where he made those small mistakes, and you tend to do that, right? And V Sharma is one of those athletes who forces you to make those mistakes. I think a good example of which we did get to see in that second goal being scored, right? When we had Theo Hernandez making that push in through the flanks, and then in that moment, that composure being shown by V Sharma, where he just decided to double ball roll over there. And when we thought that he would be taking a shot, when Vagia just pressed one of their players towards Theo Hernandez, that was the moment he found that R9 did not have any marker on him. Directly just gave him a pass and went for the shot. But there have also been instances on that where one shot had been a little hasty. Like I said, the scoreline did not really justify how good FC Goa were. I was looking at maybe a 5-0 or a 6-0. There were instances where Vanchaj had clear shot on goal chances, where he या decided to go for that one extra pass. And it was just not once, but twice or thrice that we saw that either Vagya's some defenders used to come and intercept it, or something else used to happen, as a result of which Vanchaj could not get a goal. Vakya is looking really strong. Defense is one of those areas that he has to work out on. And for all the Odisha FC fans, nothing has dwindled downward. There's still possible chances that you guys can make a comeback. All you've got to do is win the next two games, and the 3 points are for Odisha FC, because they're also eyeing out for those points on board. जी हाँ, एंड उसी के साथ जैसे कि आपने कहा कि इधर वी शर्मा के पास बहुत सारे ऐसे चांसेस बने थे जो कि वो क्लियरली गोल पे कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ कुछ पासेस जो उधर से निकाले, देखिए एक होता है ओवरथिंक करना कि आप एक पास के साथ फिनिश कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ एरियाज पे ऐसे भी पासेस उनकी तरफ से निकला है जिधर पास था ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी कवर अप किया गया था डिफेंडर के थ्रू रोनाल्डो को, एंड उस जगह पे भी पास दिया गया था एम्बापे की तरफ से, जिधर एम्बापे के सामने एक खुला मैदान और Yeah. उसी के साथ सिर्फ एक गोल पोस्ट और सामने एक गोलकीपर, लेकिन उस जगह पे भी पास दिया गया था। सो या आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है और बेहतर हो सकता था। 3-0 हुआ है वो, जैसे कि आपने कहा 5-0 मे बी 6-0, बट जीतना चाहिए था, वो जीत चुके हैं। सो पॉइंट्स जो है वो उनको मिल जाएंगे अगर इस मैच में भी वो जीत पाए तो। बट एसी गोवा की अगर बात करें तो उनका इंडिविजुअल गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि कोऑफ पे थोड़ा बहुत वो ठीक ठाक खेल रहे हो, मतलब स्ट्रगल कर रहे हो कभी कभार, लेकिन उसको छोड़ के अगर देखा जाए उनका इंडिविजुअल गेम बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो मे बी शायद हम लोगों को जो है वो एक हल्का फुल्का मैं टिल्टेड रहूंगा आज एफसी गोवा के तरफ इस मैचअप के अंदर, जो Yeah. आपने मुझे पूछा था एकदम स्टार्टिंग में। एंड ओडिशा एफसी क्या वो जिस लाइक जो हम लोग सोच रहे थे कि क्या वो इम्प्रूव करके आएंगे वागिया की तरह से, आई थिंक उनका सब कुछ थोड़ा बहुत करके इम्प्रूव था पिछले मैच, सिर्फ इम्प्रूव उनका लग नहीं था। Yeah, I think that has been one of the concerns for Odisha FC.
But for all the viewers out here who are wondering what's going on, we don't know anything, what's FIFA? So let's tell you, it's eISL Season 2 that's going on, and we are playing in PlayStation 5. We've got this game called FIFA 23, where we've got like I have already said 11 clubs participating, and everybody is eyeing for that prize pool of 33 lakhs, out of which 4.5 lakhs goes to the winners. But that being said, FIFA 23 is a beautiful game. If you have never played it, you might want to play it. It is also available on your PCs, or if you have a console, you can buy that as well. And then start building your team, go maybe for Road to Glory, or maybe spend a few FIFA points and get some nice cards like these players have. Because I'll be honest, every single card that these players own are more than my entire team's worth. That's the reality, and even TT's. He's also got to agree Yeah. on that. But coming back, now we have our second matchup of the evening just about to go live. It is going to be a co-op matchup where FC Goa, they haven't been the strongest of the club, but Odisha FC, for what they had, they just played one game and they managed to win their co-op game. So I think Odisha FC would be really, yearning for this victory. But finally, the kickoff is going to be right in front of us. It is FC Goa, the course from left to right in their orange kit, and against Odisha FC from right to left in their black. स्टार्ट होते ही एक चीज अगर हम लोग बात करें मेनली को-ऑप के ऊपर, तो इधर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव चूज किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ एफसी गोवा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉन्स्टेंटली देख पा रहे हैं कि 4 प्लेयर्स एकदम अटैक पे जा रहे हैं, मौका बनता हुआ और उसी के साथ फिनिश करेंगे लियोनेल मेसी राइट फुट के साथ, एंड पहला गोल आ चुका है एफसी गोवा के लिए। सो एफसी गोवा बहुत इसी के बारे में बात कर रहे थे कि 4 प्लेयर कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे थे डिफेंस लाइन को, एंड उसी जगह से मेसी के पास बॉल रहेगा वो तो फिनिश करेंगे ही करेंगे। I think, at this point, what options did Odisha FC have? And like you just said, they had a very aggressive approach, had 4 of their attackers right in that final third, a lot of passing options, and this is where they do not tend to miss, right? And FC Goa, they've been clinical, so finally getting over their woes of not getting Ws in the competitive co-op matches, and finally are looking to be taking a very early lead, because that was literally the first chance created and it was converted into a goal. Yeah. And the conversion rate is very high from the side of FC Goa, क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा जाए पिछले वीक पे तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट इस बार आज और भी ज़्यादा कन्वर्ट किए जा सकते थे फर्स्ट मैच पे, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किए हैं। बट लेट्स सी इसके बाद क्या होता है। एफसी गोवा एक बार फिर से लाइक बॉल कंट्रोल उनके पास ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो बॉल कंट्रोल है वो उड़ीसा के पास जाए, सो वो प्रॉब्ली टाइम बिता रहे हैं बॉल के ऊपर। इंडिविजुअल से भी ज़्यादा आई थिंक पासिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए एज ऑफ नाउ एफसी गोवा। I think, yes, like you said, I 100% agree with you. And this could be a really good chance for FC Goa, with Messi wanted to look for that space for cutback, but eventually just went out for a corner. I think they're going to take a short one. We haven't seen any of those long corners being taken, and we haven't even seen goalkeeper playing outside his line, right? Had that been the case, could have been those situations where these players could, hurt them with going for a direct corner goal. So we've seen, I think, Imad doing that once, one of his reels or something that I'd seen. So maybe if you're playing against Imad, always make sure your keeper is in the line. But now, getting back, Odisha FC taking a little bit of possession. I think they also need to start, constantly passing the ball, not maintaining, ball on just one player. But this looks to be a good opportunity. A through pass had been given and was well utilized with Bellingham towards Gullit. Mbappe does have that space, but went with that step over, but it was rightfully red. And now Gors are back on their attack. Yeah, but देखिए रूडली काफी शानदार कंट्रोल के साथ फिलहाल के लिए, बट ओडिशा एफसी ये जो गलतियां हैं ये उनको नहीं करना है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे।
बट अनफॉर्चुनेटली आज थोड़े बहुत गलतियां हम लोगों को नजर आता हुआ। एंड इसके बाद देखिए टफ तो होने वाला है, शूट लिया जाएगा Oh, बहुत देर के बाद, शायद बहुत दिन के बाद एक लॉन्ग रेंज ट्राई किया गया था जिधर वैंडेसार फुल्ली स्ट्रेच होके इधर बॉल बचा चुके हैं। बट एक शॉर्ट कॉर्नर रूडली से एम्बापे, oh no! ओह माय गॉड, Oh, TT. लक The नहीं है उड़ीसा। curse continues. The curse is real, ladies and gentlemen, and we want that being spammed in the chat also. I don't know. Even Nate just burst into at that point. What could he have done more over there? But yes, I think Bhagy's been the one who's been taking quite a few of those shots. In the previous matchup, also we saw him taking those long range shots, and with Rude Hullet, it is possible. But FC Goa not giving them a moment to breathe, instantly back on their attack. But no, Rude Hullet saves the day yet again. Yeah, for sure. FC Goa, I think वो मन ही मन में बैक ऑफ द माइंड सोच रहे होंगे, यस वी हैव 11 प्लेयर्स, बट जो 12th प्लेयर है वो हमारा लक आज काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बचे हैं लाइक 2 गोल स्कोर होने में वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। क्योंकि अभी अगर ये गोल स्कोर हो जाता तो पूरा जो लीड था वो इधर रिसेट हो सकता था एंड उसके बाद एक कमबैक दिख सकता था उड़ीसा की तरफ से, जो कि अभी के लिए तो नहीं हुआ। बट बीचों बीच से बहुत शानदार पासिंग तो कर रहे थे, लेकिन देखिए बेलिंगम की अगर बात किया जाए, इनको इसी के लिए खिलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड ऐसा मिडफील्डर जिस तरीके से वो रहते हैं, ऐसा पिलर परफॉर्म करते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार होता है। बट रोडोली से बेलिंगम वन मोर टाइम, बेलिंगम टू एम्बापे, शायद मौका बन सकता है इधर। Oh, मेसी भी थे, ओ में किया गया था बट कंट्रोल में नहीं रख पाए। yeah, I mean, little attempt again. I think he went for a step over there and did not work through. And one more thing that I'm kind of worried is why are Odisha FC not going for the green time shots? I mean, if you're going for those long range shots, might as well green time it. The accuracy, the speed increases. But look at FC Goa. This time, they wanted to go with the Trivela of zone. Again, not green timing it on Lionel Messi. Had that been done with a TOTY card, I think it's 9.5 out of 10 times that it goes past the keeper, right at the back of the net. But like you said, Bellingham, a very strong, solid player. Earlier, we used to see a lot of Yaya Toures, but after that TOTY cards came out, it was Bellingham who took over the show. And a few of the players do use the Yaya Toure. Yesterday, we saw one of the clubs using it, but I think Bellingham is still a better replacement. Both these players are tall, both these players have long legs, and as a result of which their reach is there and their defensive abilities also really coming into play on a CDM position or a holding central midfielder position. That card is phenomenal. व्हाट अ कार्ड इट इज। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि इनके एक सिंगल प्लेयर हमारे पूरे टीम से बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। सो या एंड आई थिंक इसी वजह से इतना बेहतरीन लगता है जब ऑब्वियसली लाइक अगर ये कार्ड्स नहीं भी होते हैं फिर भी प्रोफेशनल्स खेलते हैं तो वो भी देखने में बहुत मजा आता है। बट जब इनके पास कार्ड्स है सो व्हाई नॉट कि वो उसको यूज करे। एंड इस पे जो पासिंग होता है, ड्रिबलिंग होता है, पेस होता है, वो सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा शानदार। हाँ, मैं तो बहुत दिन से ड्रीम कर रहा हूँ कि मुझे एक मेसी मिल जाए, बट अभी तक Hey. इस गेम के ऊपर अगर हम लोग वापस आए Hey. तो Let's not get to Messi, okay? no, but I, 10 million I know card it what was. you sold your Messi, so let's not get there, TT. And I have gold Messi though. and you made quite a lot of profit out of it, almost around 200 300k. Yes, in FIFA Yeah. 23, ladies and gentlemen, if you are new, big, just gaining interest, that is also there. You can trade your cards if they are provided, if they're tradable. There are two set of cards, like few are tradable, few are untradable. You can also do that in this particular game. And if you haven't tried, I would insist or rather request that guys please do. There have been sales going on, but coming back to this particular matchup that we have, FC Goa, courtesy to that early goal scored, they are just at one goal up.
but we know that this one goal advantage amounts to nothing at all. Because Odisha FC have been at the same time, they've been creating a lot of chances, they've been looking deadly. It's just that little, case of lady luck that's sort of missing. Once that happens, maybe we could look at Odisha FC scoring a goal. Yeah, but one more time उधर रूड हुली जब भी आते हैं तभी कुछ ना कुछ जो है वो अलग करके जाते हैं और इस बार के लिए अटैक रोका गया था बट एक बार फिर से मौका बनता हुआ बाय द वे ओह टैकल किया गया था मोस्ट प्रोबेबली सो इसी वजह से एक फाउल दिया गया है एंड फ्री किक मिलेगा बट इस फ्री किक से कुछ कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी म्बापे को एडवांस करके आए थे एंड तीन प्लेयर्स हो चुके हैं रेडी मुझे लगता है कि रूड हुलिच से ही शायद इधर शॉट लिया जाएगा एंड यस शॉट फॉर अ पेस बट वैन डे सार उनको अगर आपको बीट करना है सो कम से कम थोड़ा कॉर्नर में तो मारना होगा आई थिंक नकल शॉट था ये बट वो जो दिशा है वो नहीं दे पाए Yeah, the direction was sort of lacking because I found the pace to be absolutely perfect. Had there been a little bit of a curl, I think that could have possibly gone in because let's be honest, they've been it's sort of kind of a long shot, and I have been trying a lot, to score free kicks. And I remember when I had the Fekir card, Nabil Fekir, another beautiful card. I used to score a lot of goals with free kicks because I knew exactly how much pace you need and the right curl. So that is also there. But all these players, they know how their cards work. They know how to exploit their players to their maximum potential. I mean, let's be honest. Even if we get all these cards, I don't know. I mean, how far can we push? Maybe towards Division Rivals 2 or something like that, but not further because these players know what the nuances of every single card are, how to use them, which card to play in which position, what is its role. Do you play your Virgil van Dijk from the left side or from the right side? That's also been up for debates. But for now, FC Goa looking really threatening from the wings, just toying around with the defenders, rather opting to pass behind. And this is the kind of composure that I really like from the two of the lads because they know that it's very crucial. All these 1-2 passes, and now a chance could be created. Hakimi with that beautiful ball roll created that opening, but R9 did take a shot, but Van der Sar to the rescue. Oh my God! एक और मौका बनता जा रहा था एफसी गोवा इधर 2-0 से भी आगे जा सकते थे लेकिन उसी टाइम पे वैन डे सार अपना काम प्रॉपरली निभाते हुए डेंजरस पोजीशन पे बॉल इधर खो भी सकता था बट इस बार डेंजरस पोजीशन बनाया जा रहा है मेसी रिसीव नहीं कर पाए उस टाइम के ऊपर बट रोनाल्डो के पास बॉल राइट हैंड साइड से रन निकाल चुके ऑलरेडी एम्बापे मुझे लगा था शायद एक और बार एक हम लोग को लॉब थ्रू बॉल देखने के लिए मिल जाए क्योंकि इसके पिछले गेम में तो बहुत सारे पासेस निकाला गया था तो वो वागिया की तरफ से था नॉट फ्रॉम वी शर्मा वागिया की तरफ से हम लोग को बहुत सारे लॉब पासेस देखने के लिए मिले थे बट कन्वर्जन रेट नहीं था उतना तो इसी वजह से कोशिश अभी इनको भी करना चाहिए कि जब गोल्स नहीं आ रहे तब वो कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा देखिए पॉज के लिए अपील किया गया बहुत अच्छा मौका था लेकिन इस बार मौका आ चुका है ओडिशा एफसी के पास काउंटर में जाते हुए बट देखिए पासिंग ऑप्शन ही नहीं है तो इधर से बिल्ड नहीं हो पाया Yeah, but when you've got Mbappe with that pace and Messi could just dribble through with Bellingham, I think went for that reverse elastico there and now will take a shot with R9. And this is it. I am done watching this game. Odisha FC. Oh my goodness. What? When is this curse going to be lifted? Just take these players to Lord Jagannath's temple. Make your prayers, seek for blessings, and maybe then they could score those goals. It feels like there's some sort of a Lakshman Rekha that, anywhere the ball is going to hit, but the back of the net. Oh my God, by the way, जिस तरीके के सिचुएशंस बन रहे हैं इधर वागिया खुद भी हंसते हुए क्योंकि उनको भी पता है कि और क्या ही कर सकते हैं देखिए अगर नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं बाय द वे अभी के लिए एक बार फिर से मौका बनता हुआ लेकिन बीचों बीच बेहतरीन एक टैकल अथवा लीडर मिलिटाओ डॉज किए रोनाल्डो को बहुत ही ज़्यादा शार्प गेम देखने के लिए मिलता हुआ एफसी गोवा की तरफ से बट ऑन द अदर हैंड ओडिशा एफसी विद कैप्टेविया
पासिंग गेम काफी अच्छा, रोनाल्डिनियो को उतना ज्यादा हम लोग गेम के अंदर आते हुए नहीं देखे क्योंकि लेफ्ट विंग को उतना यूज नहीं किया गया ओडिशा एफसी की तरफ से। बट बहुत देर के बाद किया जा रहा है रूडोलित, मौका, शॉट, फिनिश, फाइनली फाइनली गोल हुआ कन्वर्ट एंड ओडिशा एफसी आखिर के कुछ मिनटों पे आके अपना कर्ज जो है वो पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। एंड उसी के साथ कुछ देर पहले फिक्सेस बात कर रहे थे लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में, बात हुआ और कर्ज हट गया। ओ माय गॉड। That is why it's one of the Char Dhams, right? That is या the miracle that Lord Jagannath can have. But regardless, what a beautiful goal. I think this is where they were under tremendous pressure. I think you could remember from the past 10 or 15 minutes in game time, they had queued for a pause. And finally, they get a chance to get a few substitutions on. But beautiful control by Ruud Gullit over there. Whoever was on the controller would be really proud of what he did and made that right play. And suddenly, we are ओ even Stevens. We have, broken free. And now this is a chance for Odisha FC to try and maybe score a late winner because FC Goa after that early first half success have kind of been building chances, but nothing seems to have been going through. And now Odisha FC, little bit of that driven momentum in their favor. Let's see, could be those possible final few attacks of the game, and they have to make it count. With Alfonso Davis passes it on towards R9, but little loose there, and hence intercepted. वाओ, ओडिशा एफसी बहुत क्रूशियल कुछ मोमेंटम पे बॉल विन तो कर रहे थे लेकिन वो फिनिश नहीं हो पाया। आखिर में जाके वो भी बॉल लूज कर चुके हैं। बट काउंटर पे जाते हुए एफसी गोवा, क्या ये गोल के साथ खत्म हो सकता है, क्या ये विनर के साथ खत्म हो सकता है? बट नहीं, बहुत टाइम इधर लिया गया था मिडफील्ड एरिया के ऊपर एंड उसी जगह पे मैच हुआ खत्म विद 1-1 का ये स्कोर लाइन हम लोगों को देखने के लिए मिला। एफसी गोवा, जैसे कि आपने कहा कि शुरुआती में वो पहला गोल जिस तरीके से आया था उसके बाद से और वैसे अटैक पे दिखे ही नहीं। सो उसी के बदौलत कोई भी और गोल एफसी गोवा की तरफ से तो एटलीस्ट नहीं आया। बट ओडिशा एफसी, शायद उन्होंने दो चांस, तीन दोनों के chances. दोनों बार, हाँ, तीन चांसेस के बीच में एक गोल हुआ और दो बार पे लगा। हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड लक। बट ओडिशा एफसी आई थिंक कमबैक हो सकता है, उनका अभी भी मौका है। आखिरी मैच अगर जीतते हैं तो ड्रॉ हो जाएगा ये पूरा मैचअप, बट अगर ड्रॉ होता है तो चला जाएगा गेम एफसी गोवा के पास। अगर हार जाते हैं तो ऑब्वियसली इधर एफसी गोवा ही जीतने वाले हैं। सो ओडिशा एफसी को एक विन चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट मैच में। Yeah, I think they can settle with nothing less than a win if they need to open their account in the eISL season 2 this time around because they've just played one game, so they had lost that one and now are on the cusps of again losing out on those precious points. And in fact, it could have been three had they won this game, then they would have had a fighting chance in that third one. But yes, still something to fight for. That 1 point is also going to be crucial because teams above them, Kerala Blasters FC and East Bengal FC, have played one extra game each. So that really, it comes into counting. And Odisha FC, I mean, I won't say the co-op game was not good. Their co-op game was really nice. They were making those passes. Initially, looked a little hesitant, but look at the quality of this goal. I think FC Goa, their defenders could not figure out what they were actually trying to do. When they kind of thought that maybe Ruud Gullit might go for that one extra pass. Instead, with Ruud Gullit, they opted to go for that shot, which got converted into a goal, and we broke even. So now, with that final game remaining, Adi Zima against Nate, it is going to be an interesting matchup because Adi Zima, he's not really had the best of times in terms of his individual performances, but we know this player's caliber. We know what this player can do, and he's one of those lucky players, I must say, in his real account in FIFA 23, who managed to secure a Virgil van Dijk Team of the Year card, something that all these players dream of, or maybe spend a lot of money trying to get the card. Eventually, just end up purchasing from the transfer market. So quite an expensive one, but Adizima was lucky. But this time he's got all his cards unlocked, and so has Nate.
So it's going to be an interesting matchup. Let's see what happens. या लेट्स सी व्हाट हैपेंस बट अभी तक अगर देखा जाए पिछले दो गेम्स में आतिशिमा का परफॉर्मेंस पहला गेम था शुभम के ऑपोजिट पे उन्होंने एक गोल किया था बट वो ड्रॉ पे खत्म हुआ एंड उसके बाद की अगर बात किया जाए वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्श था उनके लिए 5-1 से मोस्ट प्रोबेबली उनको हार मिला था तो वो कोशिश करेंगे कि आज जितने भी प्रॉब्लम्स थे पिछले दो गेम्स में उसको वो कवर अप करें क्योंकि देखिए आज जो है वो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आज वो जीतेंगे तभी उनको उनका एक पॉइंट मिलेगा अगर वो आज हार जाएंगे तो उनको वो पॉइंट भी नहीं मिलने वाला बट बात कर ही रहे थे उसी के साथ शुरू होने जा रहा है आज के दिन का गेम नंबर 3 एंड ये गेम नंबर 3 के ऊपर आतिशिमा के ऊपर तो प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा है एंड उसी टाइम पीरियड के ऊपर अगर हम लोग बात करें इधर ऐसे गोवा लेफ्ट टू राइट खेलते हुए दिखेंगे जिधर ओडिशा एफसी राइट टू लेफ्ट अपने पहले पॉइंट के लिए एंड जीत के लिए खेलेंगे क्या वो इधर करके दिखा पाएंगे एज ऑफ नाउ बॉल कंट्रोल आतिशिमा के पास एंड एफसी गोवा हम जानते हैं आतिशिमा लॉन्ग बॉल्स के ऊपर काफी खेलते हैं बात कर ही रहे थे उसी टाइम पे एक गया ओह माय गॉड शुरुआती मोमेंट पे चांस मिलता हुआ लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक बाहर लग रहा था ओडिशा एफसी का इस बार बाहर लगा एफसी गोवा बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप एंड बात करते ही इधर प्लेयर डेब्यू सो मेसी को पहली बार के लिए उतारा जा रहा है आई थिंक उनकी तरफ से लेट्स सी क्या होता है मेसी टू रोनाल्डो के लिए ये पास दिया गया था नाइट्स की अगर बात किया जाए वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने पास बॉल कंट्रोल रखे बट वो अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे गोवा बॉल उनसे छीन चुके हैं लीड डिफेंडर से भी इधर नीचे जाके खेल रहे हैं सो एक बहुत बहुत ज़्यादा शानदार चांस लॉन्ग बॉल टुवर्ड्स रोनाल्डो फिनिशिंग विद द मेसी एंड इसी के बारे में बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही ये लॉन्ग बॉल के ऊपर खेला जाता है आतिशिमा की तरफ से एंड मेसी ये कार्ड लाजवाब है एंड आई थिंक बेस्ट कार्ड्स में से एक है एंड मेरे लिए तो ड्रीम कार्ड है मेरा Of course, a little bit of a bias there. Loves Lionel Messi, a huge fan, in fact. But I'm a huge fan of that goal, to be honest. And this is what Adizima is capable of. This is what he's got in his bag, right? All those long aerial attacking threads that come in. And was that an L2 pass? Because you kind of make those stylish passes there. But regardless, let's get back onto the game. Adizima, he's been making a lot of use of these L2 long passes, and you know, why L2 long passes, we mean outside footer passes. But there's a ball in good position with R9. You can see, you know, Messi's made the run already, but opt for Rudulit and made that pass towards Messi again. Ronaldinho looking for some opening. Maybe it was R9 he decided to give it to, but that was not the case. As now Adizima back on his attack. आतिशिमा वन मोर टाइम राइट इनसाइड हकीमी के लिए बॉल इधर खिला गया एंड देखिए बार बार कॉन्स्टेंटली आतिशिमा का जो स्ट्रेटजी है वो पूरा क्लियर हो चुका है बट नाइट्स के लिए वो चीज़ समझ पाना बहुत टफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा थ्रू बॉल खिलाओगे सो ऑब्वियसली प्लेयर्स तो सुपरमैन नहीं है कि हमें पे जाके पकड़ेंगे तो इसी वजह से इधर प्रॉब्लम्स होता हुआ एंड वही चीज़ का यूज़ तो करना चाहते हैं आतिशिमा कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ग्राउंडेड तो पासेस निकाल ही रहे हैं लेकिन उसी के साथ जो इनके लॉब थ्रू पासेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट देखने के लिए मिलता हुआ रोनाल्डिनियो राइट साइड पे खिलाया जाता हुआ रोनाल्डिनियो को डिफ्लेक्शन रोनाल्डिनियो से रोनाल्डिनियो पे डिफ्लेक्शन एंड उसी के साथ थ्रो इन मिलेगा ऐसे गोवा को हकीमी टू बेलिंगम एंड 1-2 करते हुए बाय द वे रोनाल्डिनियो हम जानते हैं ओह माय गॉड राइट इन साइड पे राइट कॉर्नर पे हकीमी थे बट बॉल पास जिस जगह पे देने की कोशिश था वो सही से नहीं हो पाया And at this point, I think Adizima looks to be in you know, complete control of this game. And this is where I think I really feel if Nate could just regain some possession, you know, just keep on passing the game,
going on, because it's still early phases of the game, right? Nothing has really just Hmm. fallen off. He could still instantly make a comeback, and one goal amounts to nothing. I think a little bit of a player lock we got to see with Lionel Messi. Whoa. Wanted to just get past the defenders. Did indeed with Mbappe that step over, not necessary. Could have maybe gone for a heel to heel in that situation from that angle, and could have maybe tried to take a shot, or could have just taken a shot. Either ways, but Odisha FC just missing out on a good chance over there as Adizima. He is back again with his attacks. Again has been relying a lot on those long through passes, and this time with a cross with R9 will not fail to miss as he scores yet again. And every single touch he makes gets converted into gold and a goal. Look at the beauty of that play. He knew exactly what he was doing. It might clearly look easy, but trust me, guys, it isn't. Now, I still have been struggling to score a goal out of a cross like that. Like, to get your player in the right position and beat such massive defenders, it takes a lot of skill. And like I said, FC Goa in complete control of this game. प्रॉपर कंट्रोल ऐसे गोवा के पास है, एंड सिर्फ इस गेम का ही नहीं, ये पूरे मैचअप का कंट्रोल अभी उनके पास, क्योंकि 2 गोल स्कोर करने होंगे ओडिशा एफसी को कम से कम इस मैच को ड्रॉ करने के लिए, और 3 गोल स्कोर करने होंगे इस पूरे मैचअप को ड्रॉ करने के लिए और अपना पहला पॉइंट लेने के लिए, जो कि बहुत टफ होगा। लेफ्ट हैंड साइड से रोनाल्डिन्हो का रन निकल रहा था, और देखिए डिफेंस लाइन इधर चौकंदा जरूर है, मौका मिलेगा इसे। वैंडेसार सेव करते हुए, हालांकि वो उतना ज्यादा ऐसा सेव नहीं था कि या उन्होंने पूरा सेव कर दिया और गोल हो ही नहीं सकता था। सेव थोड़ा डाइसी था, लेकिन या बच गए। Barely just surviving there. And yeah, I think Nate has been creating those chances on the counter attack, but this time look at, oh, the runs, the way he's predicting. What a beautiful pass, and a little bit of a misbalance over there. I mean, had R9 perfectly just tested it and then moved ahead, I was looking at maybe a 3-0. But very difficult to score like that. But, you know, the vision that Adizima has is impeccable at this point. And now, you know, with the way the gods have been playing, all they had to do was just put the ball out of play, and off we go for the halftime. As now Nate really needs to go for a mental reset. He has to, you know, understand what Adizima has been doing to him, because Nate, he's been maintaining that possession, but Adizima so clinical and so intuitive on his counter attacks has been just a delight to watch. फॉर श्योर। एंड आदिजिमा के तरफ से देखिए, इनका जो गेम प्लान है वो हम लोग इसके पिछले दोनों दिन ही देखने के लिए मिला था, एंड उससे एक चीज तो पता चलता है कि वो थ्रू बॉल्स, लॉन्ग बॉल्स, लॉब बॉल्स पे ज्यादा खेलते हैं। सो वो लॉब बॉल्स को रोकने के लिए कुछ सोचना होगा उनके ओपोनेंट्स को, स्पेशली अभी तो आज ओडिशा एफसी है, सो उनको तो सोचने की जरूरत ही है। बट इसके बाद जितने भी टीम्स, जितने भी प्लेयर्स उनके अगेंस्ट खेलने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा सोच समझ के खेलना होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ओडिशा एफसी के पास सिर्फ एक ही मौका है और एक ही चांस है कि अगर लॉब बॉल खिला रहे आदिजिमा, उनको काउंटर करने के लिए आपको अटैक जो है वो ज्यादा इंक्रीज करना होगा। आपको अटैक बार बार करते जाना है। अगर वो कर पाएंगे तभी प्रेशर क्रिएट होगा, एंड उस जगह पे जब प्रेशर क्रिएट होगा तो के लिए मुश्किलें बन सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको इतना सारा कंफर्ट जोन दे देंगे एंड उनका प्लेयर फ्रीली मूव करेगा इतने दूर से, इतना सारा गैप लेके, इतना पोजीशन लेके, देन प्रॉपर तो मौका मिल ही जाता है कि वो क्रॉस डालते रहे। और उसके बाद R9 है उधर बीचों बीच, सो वो तो बेस्ट स्ट्राइकर है काइंड ऑफ, हम लोग कह सकते हैं इस पूरे एंटायर गेम का। वो तो फिनिश करने ही वाले हैं। सो थोड़ा सा जो है वो देख के खेलने की जरूरत है। फिलहाल के लिए शुरू हो चुका है सेकेंड हाफ। एम्बापे टू पेले, एंड देखिए बॉल प्रॉपर कंट्रोल करने की कोशिश, बीचों बीच से पेले का रन निकल रहा था, बट पेले टू रोनाल्डो, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा इस बार। Yeah, not getting that much result, and now good chance for Adizima to create an attack of his own. So, for what has been happening so long so far has been all these aerial threats that you know Nate has to deal with, and he's getting quite frustrated. And there you can see even R9 getting an yellow card for that little hasty foul. But now
Adizima, look at the way he's received that pass, and look at how R9 is calling for a pass there. Goes for that ball roll, Oh, tried to take a page out of Vanch's book over there, but did not succeed. But one good thing is he's still holding on to possession, and at this point, pitch, the possession game that he was slightly ahead on after the end of the first half. Uh, नहीं दिखा बट ऐसे गोवा कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट करते जा रहे हैं मेसी टू रोनाल्डिनो एंड दोनों एक अलग मेमोरीज बट इस जगह पे देखिए एम्बापे टू रोनाल्डो मौका बन जा रहा था oh yeah, I mean there was no other way around that. It had to be a think this is like the fourth or the fifth shot that they have taken that has hit the crossbar, and now it's been maybe ifs and buts will be there. Had he gone for a finesse, maybe a little bit of a curl could have been difficult, but to pass towards Lionel Messi. But Nate again back on his counter attack with Mbappe. वाह अभी तक जो सिचुएशंस जो कि गोल भी हो सकता था लेकिन देखिए नाइट्स एंजॉय कर रहे हैं अभी तक राइट इन साइड पे हकीमी फ्रीली मूव करते हुए बीचों बीच एम्बापे फिनिश हो सकता है एम्बापे उस टाइम पे नहीं लिया गया वो रोनाल्डो को पास करने के लिए गए थे तो ये चीजें कभी कभार हो जाता है क्योंकि आप बहुत इस मोमेंटम पे बट देखिए ऐसे गोवा प्रॉपरली बॉल कंट्रोल रखते हुए मिडफील्ड को कंट्रोल करते हुए कैप्टेविया बीच में कुछ दिन के लिए मानो कि इधर कैप्टेविया खो सा गए थे लेकिन उसके बाद फुट फैंटेसी There, got the pass right, but just when he was about to take a shot. Beautiful ball roll by Mbappe, passed it on successfully and a driven through given towards Mbappe, and he is onside. Now making a run through that right wing, but Eder Militao will save the day. And well, Lionel Messi gets another yellow card. So two of their attackers are getting yellow cards, which is it's still fine. You don't see them making a lot of those fouls, but it's good that Nate is committing these players. He's getting them into position. Now we'll see them kind of getting subbed off. We will see maybe a possible Haaland coming in, or maybe some other striker. Then we've seen a few of these players have opted to always make changes to their left back. Maybe get Alfonso Davis in as a super sub. It really helps with that pace, and you can see Alfonso Davis already being present for Odisha FC.
And coming back to the conversation that we were having earlier on, I mean, there were few cards that on that left back position I really like. One is Ferland Mendy's winter wild card. He received an upgrade, and his gold card was also so good. It was like an S tier card, and even that winter wild card just made things broken. And then Theo Hernandez was always a go-to choice for all these players. Even the team of the World Cup card was also really nice card for Theo Hernandez. I somehow managed to unpack that, and then I made my entire team after selling him. So no regrets. But I think, yeah, for we've seen a lot of these professional players utilizing TT their fullbacks a lot, and we've seen a lot of those wing plays coming through. We've seen those German crosses being delivered. The usage of German crosses is kind of reduced, and now one of my favorite players, David Ginola, comes in, has that 5-star skill moves and 5-star weak foot, and could be one of those difference makers. But with just 7 minutes to go, I feel that FC Goa might just cruise through. या एंड ओनली 7 सेकंड लाइक 7 मिनट्स टू गो एंड उस एरिया पे मुझे लगता नहीं है कि और कोई भी ज्यादा मौका बनेगा. बात कर रहे थे मौका बनेगा कि नहीं, बन भी गया, गोल भी स्कोर हुआ. उड़ीसा एफसी गैप को तो कम जरूर किया, लेकिन 2 गोल्स मारने होंगे अगर उनको पूरा मैचअप ड्रॉ करना है, जो कि बहुत टफ है इस टाइम पीरियड के ऊपर. लेकिन गलतियां होता हुआ एफसी गोवा की तरफ से फिर से मौका, डेविड जिनोला, लेकिन एंडरसन सेव द मैच. एंड इससे देखिए, आप अगर डेविड जिनोला को यूज कर रहे हो एंड उस जगह से आप इस एरिया पे आके शॉट ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ वो गोल पे फिनिश करेंगे, लेकिन वो इधर नहीं हुआ. Oh, DT, those last minute jump scares that we are getting to see. And yeah, I mean, Nate, he knows that this match is over right now. And there you can see that little chuckle. And the final whistle blows off. And FC Goa, ladies and gentlemen, have gone to become the table toppers yet again, continuing their unbeaten run in the eISL so far. 3 matches played, all 3 games they have won, and they're the only team who is yet to draw or even lose a game. What a phenomenal run these lads are having. Vanshaj, he is in a stellar form, and today we saw an improvement out of Adizima, has been utilizing, has been looking so threatening on those aerial attacks, and those 2 goals were just enough. And before Nate could get a read on him, put an end to all those merciless shots from Adizima. It was too late when he almost kind of staged a comeback at almost that 87th minute with Mbappe, got even David Ginola on, but that last chance was kind of whiffed. And this was that moment where we saw, Mbappe creating that chance. And there you go, little bit of a slip up over there, and Nate had to score it. And then onwards, we felt like, yes, the momentum has shifted in Nate's favor. But regardless, there it is, the result. The first game, V Sharma had a very comfortable time. Bhagya, again, some defensive lapses and being unlucky, lost the game. Then in the second game, it was kind of tied up. And when Odisha FC had to win this game to at least share points, this is where Adizima comes through and slashes every sliver of hope and wins it for his club, and the gods standing tall at leaderboards. And at this point, I'm still wondering which club is going to take down FC Goa. और कल के दिन पे लाइक इसके पहले अगर हम लोग बात करें एफसी गोवा को लेके, सो हम लोग या पिछले मैचअप पे बातचीत कर रहे थे कि कब बैंगलोर एफसी इनसे भिड़ने वाले एंड ऑल. बट देखिए, कल के गेम के बाद बैंगलोर एफसी भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे जिस तरीके से एफसी गोवा परफॉर्म किए हैं. बट देखिए, या स्कोर लाइन हम लोगों के सामने है एंड एफसी गोवा बार बार लगातार एक के बाद एक मैच जीते जा रहे हैं. Yeah, they have been looking nigh unstoppable. And now let's take a look at who the MVP is going to be. Any guesses? I do not have, because I know it's the man in form, the man with the long hairs who had it in eISL Season 1, and still his graphics does have it. So props to the production to maintain that long mane that he still has with 3 goals scored. V Sharma,
I mean, he's one of those players who can be a potential MVP of this entire tournament. The way he's been playing, flawless, unbeaten, and he doesn't care about draws as long as he keeps on winning, crushing every single opponent that comes onto his path. And what a player he is! What a season he's having! What a start for FC Goa. And when we were wondering if Adizima could get over his woes in those individual games, today he is also really shined and performed up to his mark. And I'm pretty sure Adizima is one of those players that Hyderabad FC back in season one were relying a lot on, and he used to deliver. And now he's doing exactly the same for the gods. And FC Goa are really proud of two of their athletes. But that being said, ladies and gentlemen, we are finally done with our first matchup. We are going to be heading for a short little break, and right back is an interesting tie waiting for you.